Hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to talk about this new SonyLIV show called Manvat Murders. SonyLIV का मैं काफ़ी टाइम से fan रहा हूँ. They've given shows like Scam, Rocket Boy, Stubber, Good Luck, etc. But since last season of Good Luck, which released in I think June, they haven't been able to produce any good shows. But ये show का मैंने trailer देखा and there are some really interesting casting choices here. So the show features Ashutosh Gowarikar. There are some fine Marathi actors like Sai Tamhankar, Sonali Kulkarni, and Makrand Anaspure. So this show is primarily a Marathi web series, although there are some options of other languages like Hindi and other southern languages, but the dubbing is awful. Like मैंने हिंदी का चेक किया और एकदम वो डिस्कवरी स्टाइल वाला था कि हाँ अभी आप देख सकते हैं, ऐसा इस टाइप का dubbing था. So I'll advise, if you know the language, and even if you don't know the Marathi language, it will be better if you can watch this in Marathi. The subtitle quality at least is good. Show is basically a investigative thriller based on the real life killings which happened in 1970s in this town called Manvat in Marathwada region of Maharashtra. And the person who was able to uncover these mystery around the case was this cop called Ramakant Kulkarni from Mumbai Crime Branch. And in fact he was also responsible for solving the case of Raman Raga. Basically जो अनुराग कश्यप ने जो मूवी बनाई थी रमन राघव 2.0, that was inspired from those cases. And this show is actually inspired, or it's a adaptation of this book called Footprints on the Sands of Crime, and it was also written by this cop Ramakant Kulkarni, and Ashutosh Gowarikar plays the role. So the story revolves around the killing of 9 to 10 women in this town called Manvat, and all these murders follow a pattern, and nobody from the local area is able to solve this case. Police, have tried their best, but and uske baad then Home Minister of Maharashtra Sharad Pawar sends uh, Ashutosh Gowariker's character to solve this case in this town. So Kulkarni comes to the town. He, basically first episode में हमें पता है कि he follows certain guidelines, certain rules to capture a victim. जैसे कि बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि हाँ भाई मर्डर कहाँ पे हुआ है, मोटिव क्या है, एंड कितनी देर पहले मर्डर हुआ है आफ्टर द body is being found. So he follows the same principle, and ये principle are shown over a course of 8 episodes, and how he solved these crimes with the help of the local police. Of course, police है तो वहाँ पे they've also shown the corruption in the local police, and how he takes help of certain villagers, and कुछ अच्छे पुलिस वाले भी हैं, and he takes their help to solve the case. So basically, so premise काफ़ी सही है, actors are like amazing, but कुछ ना कुछ lack करता है show में. Okay, so I'll start about the positives and negatives of the show. So the positives, as I said, the casting and the performances are amazing. Like Ashutosh Gowarkar, we have seen his work in last year's Kala Pani. I mean, अच्छी बात है कि काफ़ी टाइम से उसकी movies नहीं चल रही है, like मोहिंजोदारो and वगैरह वगैरह जो उसने 3-4 movies last में बनाई. So he was not able to perform. So that's why I guess he's trying his hand in acting, and like he's doing a good job till now. And इस show में भी he portrays a very sincere cop. काफ़ी आदर्शवादी cop है कि हाँ torture भी करना है, तो he doesn't believe in violence. And even if somebody else is resorting to violence to कुछ उगलवाने के लिए, he'll make sure that that doesn't happen. He'll use his own ways, that he'll be empathetic with the victims. उन्हें पानी ऑफर करेगा, चाय ऑफर करेगा, and so that they can speak, and शांति से basically they can speak. So apart from Ashutosh, we have Sai Tamhankar, who does a very good job. I mean, you can almost call her second lead. Sonali Kulkarni has done a fabulous job. Like we have seen her in various Hindi and Marathi movies, and here also she's very good to the job. Makrand Anaspure, although he has limited screen time compared to Sai and Sonali, but
even he's very good at his role. Apart from that, there are other actors, चाहे जिन्होंने पुलिस के रोल किए हो या देर आर सम तांत्रिक्स इन्वॉल्व हेयर, सो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से अपना रोल निभाया है. So the acting is not an issue here. Secondly, technically it's a brilliant show. Cinematography, art direction, बैकग्राउंड स्कोर, इंट्रो म्यूजिक इज़ लाइक अमेजिंग. इंट्रो म्यूजिक तो थोड़ा सा आपको ये असुर वाला वाइब देगा कि हाँ, दैट्स द एक्चुअली वन थिंग दैट विल ड्रॉ यू इनटू द शो, कि प्रीमाइस अच्छा है, वाइब अच्छी है शो की, कि गांव में जा रहे हैं, द म्यूजिक एड्स टू इट. सो दैट्स अनदर एस्पेक्ट, कि टेक्निकली आपको इस शो में कुछ भी कमी नहीं दिखेगी. थर्ड इज़ द रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ दिस शो. बेसिकली जैसे इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर्स में जनरली होता है कि हाँ, कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, या कुछ भी क्लिफ हैंगर्स दिखाने के चक्कर में एपिसोड के एंड में कुछ भी कर रहे हैं. सो ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है. एंड गाँव की सेटिंग है, सो द डायलेक्ट, एवरी महाराष्ट्रियन स्लैंग इज़ यूज परफेक्टली. आपको बेसिकली लगेगा बीच बीच में कि यू आर बेसिकली वॉचिंग अ मराठी शो, जहाँ पे कुछ भी हाइप बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया है. काफ़ी अच्छे से उन्होंने रियलिस्टिकली लोगों को कैप्चर किया है. So talking about negatives, as I said, it's a 8 episode show, and the cases are interesting, but somehow the pacing is a serious issue here. Like maybe they could have wrapped the show in 6 episodes, कि like बीच में फोर्थ और सिक्स एपिसोड, सेवन्थ एपिसोड के बीच में काफ़ी धीरे धीरे सब चल रहा है. ऑल्दो इट्स इंटरेस्टिंग. आई मीन, मैं तो स्लो मूवीज, स्लो शो कुछ भी देख लेता हूँ, बट दिस सीरियसली हैड सम इश्यूज. सो जो लोगों को एकदम फास्ट पेस्ड शोज़ पसंद है, फास्ट पेस्ड स्टोरी पसंद है, ये थोड़ा सा वहाँ पे लोग चले जाएंगे शो छोड़ के कि यार हो गया अभी. बट इफ़ यू कैन स्टिक टू द एंड, द रिजल्ट्स आर गुड. Second is, I think some characters don't work for me. Like it could be some side characters, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भटक रहे हैं, बट आई गेट गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है, जबकि वो केस से रिलेटेड नहीं होता है. बट मुझे थोड़ा सा आशुतोष गोवारिकर का थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा लगा कि, I mean, of course, he's a simple man. He has his principles, not choosing violence to, basically उनसे कुछ भी confess करवाने के लिए. But still, some of his motives, like some of his, actions, like लगता है कि क्या चल रहा है. सो फॉर एग्जांपल, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉप ने कुछ किया है, एंड विच देयर एक्शन आर बेसिकली गोइंग अगेंस्ट द केस, बट वो कुछ करता नहीं अपनी साइड से, एंड बेसिकली कुछ कुछ भी बड़ा हो जाए, ऐसा लगता है कि इसके लिए सब नॉर्मल है, अगले दिन ही अपना नॉर्मल कहानी चालू करता है. सो बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम these minor negatives, I think it's still a very decent show. जैसा मैंने सोचा था उतना अच्छा नहीं, but still I'll give it a 7 out of 10. So yeah, okay, that's the video. Let me know what you thought about this show, and अगर आप देखते हो उसके बाद आके मुझे बताओ if you liked it or not. And like the video, subscribe the channel, and let me know if I should continue this, और कौन सी shows का आप, कौन सी movies का आप review सुनना चाहते हो. And yeah, thank you, bye. Okay, interesting trivia about Ashutosh Gowariker. So before coming to direction, he also acted in few shows and movies, I guess. And one of the shows used to air on ZTV, and the show was an adaptation of the Stephen King novel. आपको मुझे बताना है कि what is the name of that show. And just a hint, that novel was also made into a movie by Warner Brothers. It's actually two movies were made on that novel. And it's another hint, it was a horror show.